Hello, dear students. I hope you all are safe and healthy. My name is Ankita, and I am teaching as an assistant professor in Department of Computer Science and Engineering at St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. I welcome all of you to the lecture 20th of my online lecture series of object-oriented programming. And in this video, we will study few topics from Unit 2 and 3 as well, and that is object slicing, overriding member function, object composition, and delegation. I have also written some handwritten notes in for these topics, so we will discuss those topics in this video. In previous video, we studied about empty classes, container classes, bit fields, and the classes, and we started the unit second also with the inheritance, types of inheritance, and virtual base classes. We studied all these topics in previous lecture. So in this video, we will start with the object slicing. So what is object slicing? When we assign an object of a derived class to an object of the base class, that is known as the object slicing. We all know that in the case of inheritance, we usually create object of the derived class. So when we create object of the derived class and when we assign an object of that derived class to the object of the base class, so that means we are slicing the objects of the derived class. So when we have one base class and another one is the derived class, in the normal scenario, derived class object can be assigned to a base class object, but not in the other way. So what is the meaning here? You can assign derived class object to base class, but you cannot reverse it. Yeah, like you cannot assign base class object to the derived class. Have a look at this example. This is class base, which is having x and y two parameters, and this is the derived class, which is having two parameters or data members as a and b. In the main function, we have created the object of derived class, that is object 1, and what we are doing here, we are assigning object 1 to object 2. So what we are doing, we are slicing off the object 1 data members. Consider like the object 1's a and b, because this was the derived class, it was also having a and b and xy. Yes, xy was present in the base class and ab was present in the derived class. So जो इसके a and b जो data members हैं, they are sliced off, and the attributes of the derived class object are sliced up to form the base class object. बेस क्लास ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट 1 के डेटा मेंबर्स को स्लाइस ऑफ किया गया. सो जो एक्स वाई हैं वो तो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करते हैं डिराइव क्लास में, बट ए एंड बी वॉज इट्स ओन मेंबर्स only. So we have created the base class object by using the derived class object. So object slicing occurs when an object of the subclass is copied to an object of the superclass. So this was the slicing of the objects. रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है, लेकिन बेस क्लास डिराइव्ड क्लास के फीचर्स को इनहेरिट नहीं करती. ओके, सो वी कैन assign the properties of derived class to the base classes. Next is object composition and delegation. Object composition defines a relationship between the objects, and the objects are made up of the smaller objects like class objects, which have built-in objects like int, float, etc. Such objects can be considered as a computer, which is built from the smaller parts like CPU, RAM, motherboard, etc. So the processes of building complex objects from simplex ones is known as object composition, and object composition has a relationship. If you remember that in one of the previous video we have seen the relationship of the classes, in which we studied the composition, inheritance, aggregation. So these are the kind of relationship, and object composition has a relationship between the two objects of the classes. Like a human have a heart, a car has an engine, a computer has a CPU, a bird has a color. So now if we talk about the C++, there we have structures and classes as a user defined data types, which are having data members of various different built-in data types. And when we build classes with the data members, we are constructing complex objects from simpler parts, so which is known as the object composition. हम built-in data type से एक user defined data type को एक complex object को बनाते हैं, that is known as the object composition. This object composition is useful in C++ because with its help we can create complex classes by
combining simpler and more easily manageable parts. So this feature allows user to write the code faster and with the minimum errors, because we can reuse the code which we have already written and tested. So delegation का मतलब होता है passing work or the responsibility to the other objects. ये जो हमने पहले पढ़ा है composition था. Composition says that you are creating the complex data types named objects with the simpler data types like built-in data types, and composition defines the hazard relationship, and delegation means passing work or the responsibility to the other objects. Delegation is contrasted to dispatching or forwarding. So dispatching और forwarding से बिल्कुल रिवर्स होता है delegation. Delegation होता है कि आप पास कर देते हैं responsibility अपने ही जैसे दूसरे data types को. It can be alternatively related to inheritance. Delegation means that you use an object of another class as an instance variable and forward the messages to the instances. So here we have class B which is having the class A member object as the pointer P, and then the class B object gets a set of class A data fields wrapped inside the pointer P, and the class B can implement the same methods as the class A simply by passing these methods to star P by calling the methods with the help of star P. So यहाँ पर क्लास A है, इसके डेटा मेंबर्स को हम स्टार P की हेल्प से यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं. तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्लास A के को डेलीगेट कर दिया है क्लास B को. When we pass methods calls to a composed object, this is known as the delegation. So star P यहाँ पर delegation का example है. Composition is one of the fundamental concepts in the object-oriented programming. It describes a class that references one or more objects of the other classes in instance variables. Hazard relationship between objects is defined within composition. Benefits of composition says you can reuse the code. You need not to write the same code again and again, but you can reuse the existing code. Design the clean API. And delegation in object-oriented programming says where operations of one object are automatically applied to the another object. Like X is an object and have various methods. If X wants to change one of its methods behavior with the help of a new class that contains object X, and then we can provide a new implementation of that method. So consider this class point is having X and Y2 as data members. Draw is its function, and in main function we have point P as a parameter, and we are calling this method. And here P contains copy of X and Y, but initially P don't contain draw method. Initially it doesn't contain draw method, and when we call the P.draw method, it will delegate this call to the class point which contains the code for draw. So यहाँ पर एक जनरल सिनेरियो में इसने बताया है. ऊपर हमने दो क्लासेस का एग्जांपल लिया था डेलीगेशन को समझने के लिए. यहाँ पर हाउ दी एक्चुअली मेथड्स आर कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो एक्चुअली यहाँ पर डेलीगेट कर रहे हैं हम इस कॉल को टू द क्लास पॉइंट. तो जब हम P.draw मेथड को जब कॉल कराते हैं तो एक्चुअली वी आर डेलीगेटिंग द क्लास पॉइंट which contains the draw method definition. When multiple instances are created, then which will share the same draw method code. Now how a class can identify the correct data of an instance with the help of this pointer. So अगर हमारे पास more than one object होते हैं किसी भी क्लास के लिए, so what will happen? What is happening है, हमने यहाँ पर ड्रॉ मेथड लिया है जिसमें हम ड्रॉ पॉइंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करके पॉइंट को हम ड्रॉ करा रहे हैं. तो जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे P1, इट मीन्स दैट वॉइड ड्रॉ दिस ऑब्जेक्ट. दिस पॉइंटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस पॉइंटर क्लास के डेटा मेंबर्स को इनबिल्ट इम्प्लिसिटली पॉइंट करता है. जब हम ये मेथड कॉल करेंगे तो इसका मतलब है दिस ऑब्जेक्ट डॉट एक्स ऑब्जेक्ट डॉट वाई, एंड इट मीन्स P1 draw P1. So in other terms also you can say P1 draw P1. So it is calling itself in the statement P1 dot draw. So delegation also occurs in the inheritance, means in the case of inheritance it checks method exists in the subclass first, and then if it doesn't not find there, it delegates to the superclass. अगर खुद में नहीं मिलता है तो वो super class की तरफ delegate कर देता है. So this was the delegation and composition. And next comes the overriding member functions. We have seen the polymorphism, whereas we have same name
functions written for the multiple operations. And in inheritance, when both the classes, overriding concept comes into existence when we have base classes and derived classes relationship. And in inheritance, both the class they have member function with the same name and the argument, and the object of the derived class is created. So when we invoke that function, that same name function, then always derived class member function is invoked and base class version is ignored. This is called the function overriding. So what is happening here, we will see with the help of example. To access overridden function in the base class, we can use scope resolution operator. So अगर इस तरह का सिनेरियो है कि हमारे पास सेम नेम फंक्शंस हैं, तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं. इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. दिस इज क्लास बेस विच इज़ हैविंग शो वैल्यू, show val function, and this is a derived class which is having the same name function. So in the base class, one solution to resolve the same name problem, like if I create the object of only derived class, so what will happen, it will always call the derived class method. So because derived class method के पास base के भी features inherit होते हैं, तो we can expect that ये first of all base class के method को call करेगा. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डिराइव क्लास के मेथड को बार बार कॉल करता है, तो डिराइव क्लास का मेथड ओवरराइड करता है. तो इसका एक सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट अलग बनाएं और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट अलग बनाएं और दोनों को उनके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट से कॉल करा लें, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. So in the above program, we have base class and derived class. In the base class, we have show value function which is overridden in the derived class, or in the main function we have created an object of the base class and derived class and call the show value function for the each of the object. So there is not any problem because we have created separate object for the base and the derived class both. So consider the scenario 2 when we create the pointers to provide the best solution to resolve runtime problems. And अगर हम सिर्फ बेस डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों के मेथड को सेम नेम मेथड को कॉल कराना चाहते हैं, तो हम पॉइंटर्स की हेल्प भी ले सकते हैं. So in C++ we can create base class and derived class pointers as well. And now have a look at this example. This is base class and this is having show value function. Derived class it is having same name function. So in this case we have created base class pointer and the derived class object. So because we have created base class pointer, and by passing the address of the derived class object to the base class pointer, we can call the base class same name function also. So अगर हम ये नहीं करते हैं, पॉइंटर परफॉर्म नहीं करते हैं, अगेन मैं रिपीट करूँगी, अगर हम इसे ये हटा देते हैं यहाँ से और हम यहाँ पर ये भी चीज़ हटा देते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिराइव क्लास का जब हम इससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर आकर के जब हम डी डॉट करते हैं, डी डॉट शो वैल्यू अगर आप कॉल कराएंगे, तो ये हमेशा जो है डिराइव क्लास के मेथड को ही कॉल करेगा. इन दिस केस डिराइव क्लास के मेथड को ही कॉल करेगा. ओके, सो टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये मेथड ओवरराइडिंग होता है कि डिराइव क्लास मेथड इज ओवरराइडिंग एंड बेस क्लास मेथड इज गेटिंग ओवररिडन. सो जो बेस क्लास का मेथड होता है वो ओवररिडन होता है इस केस में, तो हम जो है बेस क्लास का पॉइंटर अलग बना करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एंड अनदर सॉल्यूशन इज टू यूज दी separate objects for the base class as well as derived classes. Okay, so scope resolution operator भी देख लेते हैं. हमारे पास यहाँ base class है, वहाँ वो एक void get function है, derived class में भी एक same name function है. तो जब हम derived class के method के अंदर भी हम पहले base class के method को call करा सकते हैं, then हम उसको obviously क्योंकि derived class के get function में हम base class का call करा देंगे, तो जब हम इस derived class के function को call करेंगे तो base class का पहले call होगा. So this call of the derived class function which in turn calls the get function of the base class. तो scope resolution भी another method होता है इस problem को solve करने के लिए, method overriding को solve करने के लिए. So method overriding is also resolved with the help of virtual functions which we have seen in the video of runtime polymorphism. So runtime polymorphism is the mapping of function definition with the function calling at runtime with the help of pointer it is implemented. And for using virtual functions we will always create the base class pointers जो भी हमने example देखा था. So by writing the virtual keyword in front of the base class
function, we can ignore that base class method. Okay, so ये हमारा मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट था. एंड नाउ हाउ द फंक्शन ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग आर डिफरेंट. So in function overloading, multiple definitions of a function exist by changing the signature, that is number of parameters, data type of the parameter and return type will be different obviously. And in function overriding, multiple definitions with the same signature of a function exist. So in base class and derived class, both the classes will have same signature. कोई number में difference नहीं, number of parameters में difference नहीं होगा, name में difference नहीं होगा, return time में difference नहीं होगा. मेथड ओवरराइडिंग वही इंप्लीमेंट होती है जहाँ पर आपके फंक्शन का सिग्नेचर सेम होता है डिफरेंट क्लासेस में. फंक्शन ओवरलोडिंग होता है जहाँ पर एक क्लास में आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंट सिग्नेचर के साथ में अवेलेबल होगा, तभी वो आपका फंक्शन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पर इम्प्लीमेंट होता है और रिजॉल्व होता है, और फंक्शन ओवरराइडिंग आपका रन टाइम पे रिजॉल्व होता है. यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वॉइड टेस्ट इंट इंट, इस तरह से भी आप दे सकते हैं. दिस इज़ अ टेस्ट फंक्शन विच इज़ हैविंग सिग्नेचर, 3 डिफरेंट सिग्नेचर्स विद डिफरेंट पैरामीटर टाइप और रिटर्न टाइप. और इसमें आप देख सकते हैं बेस क्लास का ये डिस्प्ले फंक्शन है, डिराइव्ड क्लास का भी डिस्प्ले फंक्शन है. सो इन फंक्शन ओवरलोडिंग दैट इज अचीव्ड एट द कंपाइल टाइम, वी नो दैट फंक्शन ओवरराइडिंग अचीव्ड एट द रन टाइम. एंड ओवरलोडिंग डज नॉट necessarily occur inheritance. Overloading does not necessarily occur in the inheritance, and function overloading occurs in the inheritance. Overloaded functions are in the same scope, overridden functions are in the different scope. ये different classes का के अंदर exist करते हैं function, same name functions. Overloading is used to have same functions which behave differently depending upon the parameters passed to them, and overriding is required when derived class has the same function to do some added different job than the base class function. So overloading जो है वो की जाती है to have the same name functions जो कि जिनका behavior different होगा और जिनमें ऑपरेशन और फंक्शन आप जो लॉजिक आप लिखेंगे वो डिफरेंट होगा. ओवरराइडिंग जो होती है वो ज़रूरत होती है व्हेन डिराइव्ड क्लास एंड बोथ द बेस क्लास हैव सेम नेम फंक्शन टू डू सम एडेड डिफरेंट जॉब. कुछ अलग से कुछ उसमें एग्जिस्टिंग फंक्शन के अंदर ही एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जब आप सेम नेम फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में भी क्रिएट करते हो, दैट इज़ द फंक्शन ओवरराइडिंग. सो this was the function overloading and function overriding. Next comes the what is the order of execution of constructor in case of base class and the derived class, or you can say in the case of inheritance. Whenever we create an object of a class, the default constructor of the class is invoked automatically to initialize its members. And if we inherit class from the another class and create an object of the derived class, it is clear that the default constructor of the derived class will be invoked, but before that the default constructor of all the base classes will be invoked. So that is the order of invocation of the base class. Default constructor will be invoked first and then the derived class object. कभी भी हम जब बेस derived class और base class यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस में, चाहे सिंगल इनहेरिटेंस हो, मल्टी लेवल हो, मल्टीपल हो, always the base class constructors gets called first. So this is the order of calling constructor and destructor in case of inheritance. ये मैंने डायग्राम यहाँ पर ऐड किया जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हो. Suppose we have 3 classes A, B and C. It is having multi-level inheritance. So in this case, if all the 3 classes have their default constructor, so order of execution क्या होगा? सबसे पहले बेस क्लास जो सबसे पहली बेस क्लास सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो कॉल होता है. देन उससे इमीडिएट बेस क्लास का एंड देन उससे चाइल्ड क्लास का. जबकि डिफ़ॉल्ट जो डिस्ट्रक्टर कॉलिंग जो इन्वोकेशन होता है वो रिवर्स होता है. सबसे पहले हमारा क्लास सी यानी चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. जैसे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो जो डिस्ट्रक्शन जो है वो रिवर्स स्टार्ट होता है. क्लास सी डिस्ट्रक्टर विल बी डिस्ट्रॉयड फर्स्ट, देन क्लास बी, देन क्लास ए. सो why did the base class constructor call on the creation of object of the derived class? To understand this, we will have the scenario of inheritance. What happens when we inherit a class from the other? The data members and the member functions of the base class come automatically in the derived class based on the access specifiers, but the definition of these members exist in the base class only. So when we create an object of the derived class, all the members of the
derived class must be initialized, but the inherited members of the derived class can only be initialized by the base class constructor, as the definition of these members exist in the base class only. So this is the reason why the constructor of the base class is called first, to initialize the inherited members. Let us have a look at the example. So here we have one class parent, and this is having one base class constructor. Child class is the derived class. It is also having its own default constructor. We created the object of the child class, that is obj. So first of all, automatically default constructor of base class will be called first, and then the default constructor of the derived class will get called. एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी केस देख लेते हैं. दिस इज अ पेरेंट क्लास. इट इज़ हैविंग वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ये पेरेंट आई का एक पेरेंट क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. चाइल्ड क्लास भी अपना एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. तो जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं तो वी ऑलवेज हैव द इनिशियलाइजर लिस्ट, क्योंकि हमें चाइल्ड क्लास के पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें जो बेस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उनको भी इनिशियलाइज करना होता है. दैट्स वाई you will always use the initializer list when you are working with the parameterized constructor in the inheritance. So what will happen here, हम derived class के object डेटा मेंबर के साथ साथ हम बेस क्लास के डेटा मेंबर को भी कॉल करेंगे. सो ऑर्डर हमारा वही रहता है. सबसे पहले बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. बट द मेथड टू इनिशियलाइज the value or the data members of both the classes is to use the initializer list. So this was all about the object slicing, object delegation and composition, order of execution and constructor. We will see next topic in the next video. Thank you so much. Take care.